Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विषय रे पढिबा देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली जदि आम देखा जो न्यूटनियन रिलेटिविटी रे किछिटा डिमेरिट्स तार देखा गला किछिटा मॉडिफिकेशन दरकार पड़ला ताकू पुणी मॉडिफाई करिकी गोटे आ गोटे नुआ करी थ्योरी टे प्रपोज कले सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जोटा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली इट इज the physical theory of measurement in inertial frame of references as proposed by Albert Einstein in the year 1905 से गोटे या ऊपर पेपर लिखिथिले जार ना हला on the electrodynamics of moving bodies. So it generalizes the Galileo's principle of relativity that all uniform motion is relative and there is no absolute and well defined state of rest. पूरा पूरी एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट बोली किछि भी नाही ओके जिते सबू भी आम जिनस देखुचु सबू किछि रिलेटिव मोशन होची ओके अच्छा स्पेशल थ्योरी जो अच्छी इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स जार वैल्यू 3 into 10 to the power 8 meter per second so regardless of the state of motion of the source यार स्पीड लाइट रो सेम रहिबो कांस्टेंट रहिबो एंड दिस थ्योरी हैज वाइड रेंज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच हैव बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड यार एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करा जाई सारिछि इंक्लूडिंग योर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देन टाइम डिलेशन relativity of simultaneity then contradicting the classical notion that duration of time interval between two events is equal for all observers जोटा कि contradict कला is special theory of relativity. Now combined with other laws of physics the two postulates जोटा अच्छी आम आपको तौर पढ़ा of special theory of relativity it predicts the equivalence of matter and energy given by the mass energy equivalence formula that is E equal to mc square c हिगला speed of light in vacuum or free space. Now one of the consequences of this theory is that it is impossible for any particle that is having a rest mass and it can be accelerated to the speed of light. जदि गोटे particle टा गोटे rest mass अच्छी non-zero rest mass ताले it cannot be accelerated to the speed of light. तबे ये जो theory रो ना special बोली कि कहीं के हला because it is applicable to the case of principle of relativity only in case of some special cases of inertial frame of references that is the frames of references having uniform relative motion with respect to each other तापरे आइंस्टाइन याकू जनरलाइज करबा पई गोटे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप कले in order to apply the principle in a more general way that is to any frame of references ताले a special theory of relativity होची गोटे valid approximation to the case of general theory of relativity. अच्छा आइंस्टाइन को रिवोल्यूशनरी आइडिया कौन थिला ना जो इथर अच्छी गोटे हाइपोथेटिकल मीडियम जोटा आम कहूँ आइंस्टाइन कहले जे मोशन थ्रू इथर इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस ओके इथर रे मोशन होची बोली किछि सेमती माने नाही ओके इट इज बेसलेस मीनिंगलेस while motion relative to material bodies has some physical significance जत्ते सब आम मोशन देखुचु सेटा होची relative okay thus the basis of this revolutionary idea actually यार basis थिला to find
न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस जो गोटे इवेंट रो पोजीशन कोऑर्डिनेट जहां कि आम स्पेस कोऑर्डिनेट्स कहूँ आ सहित टाइम कोऑर्डिनेट तार केमती आम ताकू डिस्क्राइब करिपरिबा जेतेबेले से इवेंटा जो फ्रेम रे अच्छी से आइदर रेस्ट रे अच्छी कि मोशन रे अच्छी ताकू जानिबा पई एई रिवोल्यूशनरी आइडिया को आइंस्टाइन प्रपोज करथिले जदियो याकू प्रथमे सस्पेक्ट करथिले लॉरेंज किंतु क्लियरली यार स्टेटमेंट रखिले सर एल्बर्ट आइंस्टाइन अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो एब्सोल्यूट टाइम एंड इट मे बी वेरिएबल फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू अनदर तेणु टाइम भी एब्सोल्यूट बा गोटे फिक्स्ड वैल्यू नुह ओके ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर यार वैल्यूटा वेरी करुची बोली आइंस्टाइन कहले हेन्स साइमल्टेनिटी माने एका संगे गोटे इवेंट जदि घटुची बोली आमे कहूचु एक्चुअली इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट बट रिलेटिव ओनली okay so two observers situated in two different frames moving with uniform relative velocity with respect to each other should have their own proper times suppose t out t dash such that t is not equal to t dash okay with the rejection of absolute time and equality between your t and t dash ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଠି ପାଇଲା ଯେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ର ମଧ୍ୟ एक्चुअली किसी वैलिडिटी नहीं एब्सोल्यूट स्पेस इज ऑल्सो नॉट रियल ओके सो लेट अस कम टू द मेन टॉपिक जोटा आमर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सो यही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जमती कहली ताको प्रपोज करते सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इन द ईयर 1905 आ यार दुईटा फंडामेंटल पोस्टुलेट्स अच्छी नंबर वन the laws of physical phenomenon are the same when stated in terms of two systems of references or two frames of references which are in uniform translatory motion relative to each other so एठी जो inertial system कथा कहूँ ताको आम डिफाइन करिपरिबा एज ए कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस within which the law of inertia that is the Newton's first law of motion holds okay maybe सेठी बॉडीटा रेस्ट रे थाउ किंबा यूनिफॉर्म मोशन रे थाउ सो ए बॉडी on which no net external force is acting then it will move with a uniform velocity eta ame janichu if it is an inertial system hence according to this first postulate the mathematical form of a physical law remains the same for any two observers moving with constant linear velocity relative to each other therefore it is not possible to distinguish one inertial system from another by an experiment in physics एही भलिया आमे डिस्टिंग्विश करि परिबा नाही गोटे inertial frame आ गोटे inertial frame सहित by applying the physics experiments okay as the laws of physics are the same in all the inertial system okay ତେଣୁ in other words there is no preferred inertial system okay अच्छा second postulates को आस एठी कहूची एटा होची मेन postulate टा the velocity of light in vacuum is constant that is 3 into 10 to the power 8 meter per second this is the velocity of light now it not only is independent of the direction of propagation but also of the relative velocity between the source and observer so एटी देखिला हमें जो first postulate it is the principle of equivalence and is a generalization from wide range of physical experience and second postulates it appears to represent a simple experimental fact and of the two postulates the second one is more important jemti कहली and more basic to the theory than the first one this is because the theory departs from the classical ideas not through the first postulate rather through the second postulate जोटा कहूची कि velocity of light vacuum रे समान रहिबो independent रहिबो जे कोनोसी भी से frame of reference हेई थाउ आउ तमरो सोर्स आ ऑब्जर्वर भितरे जेमती भी रिलेटिव वेलोसिटी हो velocity of light टा सेम ही रहिबो so this is all about your postulates of
special theory of relativity. Thank you.